electromotive force, negative number of coils, flux, magnetic flux, the rate of change of flux, d phi by dt. लिखी ना time rate of change of magnetic flux. से कौची एथर mainly deal about polarity विषय gives the polarity of the induced EMF in a clear and concise fashion. Polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल गुड़ाक से एमती भाव में जो करंट प्रोड्यूस हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स रे चेंज आसवा सकाशे से करंट प्रोड्यूस होला से मैग्नेटिक फ्लक्स टाकू अपोज करने चेष्टा कर तो नेगेटिव साइन से आस ना से कह नेगेटिव साइन शोन इन इक्वेशन 6 दिस इफेक्ट. We see that north pole of a bar magnet is being pushed towards the closed coil. Figure 6.1, 6.6. Oh. 6.1. We see that north pole of a bar magnet is being pushed towards the. As the north pole of the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux through the coil increases. Hence, current is induced in the coil in such a direction that it opposes the increase in flux. This is possible only if the current in the coil is a counterclockwise direction with respect to an observer situated on the side of the magnet. Anti-clockwise तो मन रखिबो जिन चोड़ा एटा possible सेतिक बेला हो. Note that magnetic movement associated with this current has north polarity towards the north pole of the approaching magnet. Similarly, the north pole of the magnet is being withdrawn from the coil. The magnetic flux through the coil will decrease. So, to counter this decrease in magnetic flux, an induced current is produced which flows in clockwise direction and its south pole faces the receding north pole. जो करेन्टा बनब से करेन्टा भी गोटे मैग्नेट ना तो से तार साउथ पोलटा जो नॉर्थ पोलटा को तुम काढ़ुच से आड़ की बनब क्लॉक वाइज बुली बुली देख चित्रटा है. दिस वुड रिजल्ट इन एन अट्रैक्टिव फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द करेस्पोंडिंग डिक्रीज इन फ्लक्स. तो नॉर्थ साउथ हम बस दीटांक केस रे सैया कॉइल रो साउथ टा जो नॉर्थ पोल टा तुम रिसीव करछ से आड़ी की रहइबो ना सब बेले से तो नॉर्थ पोल टा तुम नहीं की जाउतलो पाखा पाखी आरंभ करछ. As the north pole of the bar magnet moves towards the coil तो कॉइल रो साउथ पोल टा सेठी आस जिवो सामना कर जिवो कौन हम ताले अट्रैक्शन हम अट्रैक्शन है माने से अट्रैक्शन फोर्स ने कॉइलटा भी गोटे मैग्नेट बेले बिहेव कर ना सोलोनॉइड तुम पढ़िल परा सोलोनॉइडटा कॉइल अच्छी तो तार साउथ पोलटा अलाइन हो नॉर्थ पोल ये तुम गोटे मैग्नेट नॉर्थ पोल आड़ी दौच कॉइलटा तो तांको भीतर गोटे अट्रैक्शन क्रिएट हम मैग्नेटिक फ्लक्स जोटा हो चेंज हो तुम भर्ती करने सकाशे मैग्नेटिक दीटांग मैग्नेटिक फिल्टर जो इंटरैक्शन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी या कही ना फ्लक्स टाक बुझी से रोकब कौटा रोकब अट्रैक्शन फोर्स बुझीपाल इंड्यूस करेन्ट रो पोलारिटी एमती हम है. What will happen if an open circuit is used in place of the closed loop in the above example? In this case too, an EMF is induced across the open ends of the circuit. Se kuch open end रे भी गोटे EMF produce हो.
सर ये जो इंड्यूस्ड करंट विषय हम पढ़ते सर इंडक्शन थिला जो से थे ता भीतर तो ओटा कॉइल इंडक्शन हां एटा पे सेम तो हां हां से कॉइल सेम हां कॉइल इंड्यूस होचो से जैसे हीट टा प्रोड्यूस हो से मैग्नेट टा बनू जी परा से इंडक्शन रे हीट टा बनू मैग्नेट हां से कॉइल टा पर इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट ले हीट केम जो बुलुची करंट द्वारा से करंट क्रिएट करूची करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होची गरम बाहर से हीट आकर डिसिपेट होची जते समय बुलिबो सेते टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीवो तार गोटे लास्ट लिमिट अछि गोटे गोटे देखिथिबो सर 2000 वाट कि 2200 वाट एमती 3000 वाट ओवन जो से माइक्रो ओवन तो कॉइल टा पूरा चलिबो हीटिंग एलिमेंट हां हीटर एलिमेंट आयरन से हां हां एठी सेम हीटिंग एलिमेंट नाही एठी हीट टा खाली प्रोड्यूस होची गोटे इन्सुलेटिंग बोर्ड अच्छी जोटा कि हीटर किसी असुविधा नहीं तुम तापर पकई पर बट से हीट को कैप्चर करिया पे इंडक्शन बेस्ड मैग्नेटिक बेस हां सेटा मैग्नेटिक बेस जो थाय ओले कलर तमे आडू साडू यूटेंसिल्स बसैला हबनी मैग्नेटिक बेस वाला बसैला मैग्नेट नो दीज आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से आइडेंटिफाई करिवे से हीट को कैप्चर करनी बुझियला ये जिनसटा भी केते ब्रेन खर्च करिक रही ये जो इंडक्शन कुकर लोग सब बनो भातटा नहीं सब हमर मु दिल्ली रु अछि इंडक्शन है किनी ऑनलाइन शॉपिंग रे किनी सही दिल्ली नोएडा पाखा पाखी गोटे ऑनलाइन शॉप था तो बहुत ना करथला एबे आ नाही कोन सेटा अन्नपूर्णी शॉप 24 की कोन थला भलो जिनस दिए in this case too an EMF is induced across the open ends of the current open circuitry the direction of the induced EMF can be found using Lenz's law consider they provide an easier way to understand the direction of induced currents note that say counter clockwise or clockwise it बुझी देखो ना ना कॉइल टा नॉर्थ आड़ी नौ चोटी ना एटा किसी लिखिनी से इथरे बुझी थबो note that the direction shown by this and this indicate the directions of induced currents अरे एठी ना कॉइल टा को एटा होची मैग्नेट सुनो कॉइल टा को तुम नॉर्थ पोल आड़ी की नौचो हला देखा एटा क्लॉकवाइज बोलला इंड्यूस करंट कॉइल रु माने एठी एटा एमती जाउची माने तुम नहीं जाउचो एटा बुझिया थ्रू द नोज थ्रू एटा एटा बाहर को नहीं जाउचो तो इन दैट केस पे का हां एटा एंटी क्लॉकवाइज चलला a little reflection on this matter could continue as a correct देखो ये बहुत इंपोर्टेंट कथा से कहला है जगह ये जो लेंस लॉ द बार मैग्नेट विल एक्सिक्यूट इन दैट केस suppose the induced current was in a direction opposite to the one depicted in figure 6.6a यार opposite direction है भाभी नहीं हो यार opposite direction है current एमिति flow कुछ in that case the south pole due to the induced current will face the approaching north pole of the magnet north pole जो आसुची एक coil रो south pole टा approach करिवो नो ये कहया गला the bar magnet will then be attracted towards the coil attracted है जो बुझियाला कथाटा शिखुची जदि एमिति हला शिखुची the bar magnet will face the approaching of the एदरा कोन अब the bar magnet will then be attracted towards the coil at an ever increasing acceleration साई कि नहीं जुड़ी जानी मैग्नेट ever increasing acceleration. A gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and kinetic energy will continuously increase without expending any energy. बिना energy खर्च रे
से उड्डिकी जीव या पाखक बुझीगला ये से गोटे कथा धरले कहले दिस कैन हैपन जदि एमती हो पारे वन कुड कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन बाय अ सुटेबल अरेंजमेंट दिस वायोलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस कैन नॉट हैपन ताले जन गोटे एमती मोशन मशीन बनइब जोटारे से चली कंटिन्यूअसली चले बहुत स्पीड रे जीव किसी एनर्जी खर्च हेनी सो दिस इज है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ए जिनसटा नाउ कंसीडर नहीं अरे एनर्जी जदि किसी खर्च न होउची तो एमती केमती हम पोटेंशियल एनर्जी या भीतर जो अच्छी से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ना अब बिना चेंज एनर्जी बिना चेंज हो काइनेटिक एनर्जी हो गला एमती केमती हम सो इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गोटे एनर्जी फॉर्म आउ गोटे एनर्जी फॉर्म रे सुनो गोटे एनर्जी फॉर्म आउ गोटे एनर्जी फॉर्म रे बदली जाए से आम कहू बा मैटर रे कन्वर्ट हो जाए से आम कहू एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट्स ओनली इंटर कन्वर्टेबल बिटवीन मैटर एंड एनर्जी तो भाई सेटा तो होनी ना ये जन जदि कह यार अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे करेन्टा यार इंड्यूस करेन्ट यार अपोजिट डायरेक्शन यहाँ कि एक्चुअल एमती हवा कथा जदि अच्छी ताले एमती सिचुएशन आसो से कौच बट इट इज इम्पॉसिबल नाउ कंसीडर द करेक्ट केस 6.6 द बार मैग्नेट एथर ठीक जिनटा धर से केमती एनालिसिस कर जिनटा in this section the bar magnet experiences repulsive force due to the induced current. Therefore, a person has to do work in moving the magnet. Magnet को बिड़ी काढ़िया पे जस्ट करा पड़ो नहीं ठेलिया को पड़ो मैग्नेट ठेलिया को पड़ो रिपल्स हो ना रिपेल हो ना so where does the energy spent by the person go? This energy is dissipated by joules heating produced by the induced current. एटा हीट रे प्रोड्यूस हो जाए इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हम एटा हीट आकार डिसिपेट हुए इलेक्ट्रिक करंट रो मैक्सिमम पोर्शन हीट आकार डिसिपेट हो जाए कही ना एटा देखीदेव थ्योरी गुड़ाक मुझे स्किप कर थ्योरी पार्ट गुड़ा निहाती देखीदेव है 6.4 टिक मार दौर 6.5 थ्योरी क्वेश्चन गुड़ा देखीदेव निहाती जो डेरी है सारा So she goes, so far we have studied the electric currents induced in well-defined paths in conductors like circular loops. Even when bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, induced currents are produced in them. माने bulk pieces of conductor, खंड piece, किसी एक pathway नो. However, the flow patterns resemble swirling eddies in water. पानी रे जो ripples. This effect was discovered by physicist Fanacold, and these currents are called eddy currents. देखी जे एडी करंट का लिखता ना रे लगी ना ना सेटा एडीज बड़ा देखिया पे पानी रे जो ripples होची से बड़ा देखिया पे पैटर्न पानी रे eddy currents are generated in the copper plate while entering and leaving the region of the magnetic field. ए करंट से पानी रे फॉर्म हो पानी रे जेमती से करंट रे ये एडी करंट्स को सेडा को एडीज को आजे इंग्लिश रे से जो से रिपल्स उड़ा को पानी रे गुडा हां जो एडीज को आजे तो सही ना रे पड़ी छै एडी करंट. Consider the apparatus shown in the copper plate is allowed to swing like a simple pendulum between the pole pieces of a strong magnet. It's found that motion is damped and in a little while the plate comes to a halt in the magnetic field. रही जाउछ प्लेट ता We can explain this phenomenon on the basis of electromagnetic induction. Magnetic flux associated with the plate keeps on changing as the plate moves in and out of the region. नहीं जिबा आशा कला माने फ्लक्स चेंज हो
The flux change induces eddy currents in the plate. Directions of eddy currents are opposite when the plate swings into the region between the poles and when it swings out of the region. भितर को गले गोटे एडी करंट रो गोटे डायरेक्शन, बाहर को गले आ गोटे डायरेक्शन एमती बुझियो 80 Cutting slots in the copper plate reduces the effect of eddy currents. खंड 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 काटी देछि बुझी परछो माने इफेक्ट रेक्टेंगुलर सोर्स हां को ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କୁ ପାଖାପାଖି ଆଣିବା ସେମାନେ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଲ ହେଇଥିବ ସେନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ସେମ୍ ପୋଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରିପେଲ କରିଯିବେ ନା। ହେଲେ କି ଯେ ନର୍ଥ ସାଉଥ हाँ गोटे मैग्नेट द्वार एमती यू शेप मैग्नेट वाला यू शेप मैग्नेट नॉर्थ साउथ बा हॉर्स शू सही यू शेप जहाँ हॉर्स शू से rectangular slots are made in the copper plate as shown in coil. Area available in the flow of eddy currents is less. Thus the pendulum plate with a hole or slots reduces the electromagnetic damping and plate swings more freely. डैम्पिंग ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱିଙ୍ଗିଂ ମୋସନଟା କମି ଯାଏ ନା, ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ପଡ଼ିଥିଲ 11th ରେ, simple harmonic motion. Note that magnetic moments of the induced current opposes the motion depending upon the area enclosed by the currents. M equals to I into A, magnetic moment. मने पड़ला? This fact is helpful in reducing eddy currents in the metallic cores of transformers, electric motors and other such devices in which a coil is to be wound over metallic core. गोटे coil को metallic core भितर बुलेइबे। Eddy currents are undesirable since they heat up the core and dissipate electrical energy in the form of heat. सबु थरे eddy current produce होची, गरम होची। Eddy currents are minimized by using laminations of metal to make a metal core. The laminations are separated by an insulating material like lacquer. The plane of the substance, lacquer. The plane of the limitations must be arranged parallel to the magnetic field so that they cut across the eddy current paths. This arrangement माने magnetic field संगे रे एमान का arrangement टा parallel रही थी बात जो coil हला cut across हो जितने सारे इंड्यूस करे माने एडी करंट था सावित्री मैग्नेट हाँ एडी करंट सेठी प्रोड्यूस होची बट सी कहूची माने ए जो डिवाइसेस उडा ट्रांसफार्मर्स उडा इलेक्ट्रिक मोटर्स उडा आ सब जो डिवाइसेस अछि ता भितर सब बेले अरेंजमेंट पैरेलल थिबो सो दैट दे कट अक्रॉस एटी कहूची मा उतर पढि देकी कहूची से कथाटा से कहूची द प्लेन ऑफ द लैमिनेशन मस्ट बी तो जो लैमिनेशंस उडा रहइबो से कॉइल उडा को लैमिनेट करिवे हला सब पैरेलल रहबा दरकार माने परस्पर को पैरेलल रहबा दरकार लैमिनेशंस काहे कि जो एडी करंट्स उडा प्रोड्यूस होबे से दे कट अक्रॉस द एडी करंट्स पाथ सो दैट दे कट अक्रॉस द एडी करंट्स एम्प्टी since the dissipation of electric energy to heat depends on the square of the strength of electric current, heat loss is substantially reduced. heat loss तथापि heat बहुत जाउची eddy currents are used to advantage to certain applications like magnetic braking in trains. Strong electromagnets are situated above the rails in some electrically powered trains. When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the train. As there are no mechanical linkages, a braking effect is smooth. rails कौन सा पटरी लाइन उड़ा रेल को रेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग जो स्मूथ को जो ब्रेकिंग ब्रेक टाइम मारला पर धक धक थोड़ी ना होची
से आराम से ହେଇକି ରହୁଛି ତ ସେଇଟାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମିତି ହଉଛି। ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟର କାମ ସେଟା ରୋକିଦେଉଛି ହ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ଓଜନ ଇମାଜିନ୍ କର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ ସେ କରେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର ଥାଏ ତା ଉପରେ ସେଇଥିରେ ଚାଲେ। electromagnetic damping certain galvanometers have a fixed core and a non-magnetic metallic material when the coil oscillates say core bhitere oscillate kare bulli entim to hotubo the eddy current generated in the core oppose the motion and bring the coil to rest quickly jaldi bond hai induction furnace eti asila furnace can be used to produce high temperatures and can be utilized to prepare alloys by melting the constituent metals say induction furnace ri alloy guda bani paribona high frequency alternating current is used through a coil which surrounds the metals to be melted the eddy current generated in the metals produce high temperature sufficient to melt it heat produce kar do na eddy current guda electric power meters the shiny metal disc in the electric power meter देखिबो गिरी 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 बोलथो हाँ गोटे चक्काटे गिरी गिरी बोलथो मीटर भीतर देखिबो ये नॉर्मल मीटर हाँ rotates due to eddy currents electric currents are induced in the disc by magnetic fields produced by sinusoidally varying currents in a coil you can observe the rotating shiny disc in the power meter of your house guys मींस को कॉइल अरे कॉइल गोटे डिस्क टे एमती गिरगिरी गिरगिरी की बोलथो प्लेट टे एमती पूरा गोलिया प्लेट टे गिरगिरी गिरगिरी बोलथो नाइ ना बोल खाली से धारुटा देखा जिवो तुम तो टिके तो कोणी के ऊपर को नइबो प्लेट टे टिके देखा जिवो सेटा ओहो हां 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 से तळे खाली गिरगिरी की बोलथो जो रीडिंग जोड़ी दे ता तळ टिके बस 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 बड़ा मन नतले सेटा कहया नॉर्मल मीटर जोड़ा ये बसे जे इलेक्ट्रिक वाला बसे सेटा जगह नहीं सेटा ना डिजिटल है नॉर्मल डिजिटल है डिजिटल नॉर्मल inductance an electric current can be induced in a coil by flux change produced by another coil in its vicinity flux change produced by the same coil these two situations are described separately in the next two the flux through a coil is proportional to the current thus that is the flux no b no directly proportional to current 30 d phi by dt कर दला rate change time rate change flux current receive कर दला for a closely wound so the n phi b is directly proportional to I तो सेठी सेमती करियो बोधे डी क्या लगेला डेरिवेटिव लगेला नहीं हो the called flux linkage is used which is equal to n phi b for a closely wound coil in such a case से कहूँ ये जो constant proportionality जोड़ा यूज करनी काई नाम एटी कोडी constant proportionality यूज कर is called inductance से गुडा inductance को करें we shall see that inductance depends only on the geometry of the coil if a constant k it लिख लेनी intrinsic material properties this aspect is akin to capacitance and is for a parallel plate capacitor depends on the plate area and the plate separation geometry the dielectric constant k of the intervening medium intrinsic material k पकेला extrinsic और intrinsic पढ़ी थलो देखी बोटी कैसे इतरे कैपेसिटर पर सही तरह थला पर extrinsic capacitors intrinsic capacitors तब parallel plate सही तरह inductance is a scalar quantity it has dimensions এটা দেখে দিলা given by the dimensions of the flux divided by the dimensions of current the SI unit the SI unit of inductance is Henry and is denoted by H it is named as SF Henry
mutual inductance, which shows two long coaxial solenoids, theta solenoid, coaxial, ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାରଟା, each of length L. ଏଠି ଆସିଗଲା ଇଏ ଆଉ derivation of. We denote the radius of the inner solenoid as S1 by R1, number of turns per unit length N1. The corresponding quantities for the outer solenoid R2 or N2, number of turns. बुझिएगा? Let N1 and N2 be the total number of turns of coils S1 and S2 respectively. ହେଲା? टर्न्स पर यूनिट लेंथ को N1 कहिछि माने गोटे टर्न को खोली देले जति लंबा हो सेटा को N1 स्मॉल n2 और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स केतेटा अछि सेटा को कैपिटल N1 कैपिटल N2 बुझि पाले तो देयर इज नो कंफ्यूजन व्हेन I2 इज सेट अप थ्रू S2 it in turn set up a magnetic flux through S1 obviously करिवो denoted by phi 1 कर दियो the corresponding flux linkage solenoid S1 n phi m2 m12 I2 कर दिला m12 is called the mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid 2 solenoid 1 टा कोन इंड्यूस कला करंट 2 सकासे एटा जेमते f12 से बळे it is referred एठी कांस्टेंट एटा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रुहे ना एठी से पूरी लाइट M12 एटा को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहले एटा को इंडक्टेंस कहउतरा ना ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को इंडक्टेंस कहउतरा ना जत्ता बळे एमती दीटा कॉइल सकासे एबदे होची से एठी से सेटा हां म्यूचुअल कह देला with respect to solenoid it is also referred to as the coefficient of mutual induction for this simple coaxial solenoid it's possible to calculate M12 the magnetic field due to the current I2 in S2 is mu 0 N2 I2 N2 टा होची से जो यूनिट लेंथ टा the resulting flux linkage एमते लिखिला N1L ता length the pi r square area length और एटा उसर कौन magnetic field एटा होची तारा magnetic field एटा होता magnetic field L2 नो I2 correct तारा मन रखिबा इजी टा एटा किछि कष्ट नो where N1L is the total number of turns the M12 रो एक्सप्रेशन रा से एठी लिखिला एटा सबु कांस्टेंट हला केवल I2 टा नो ऐसे अलग आउ किछ नै एटा को सैटिस्फाई करछि देखो ना n1 phi 1 equals to m12 I2 तो एई तीनटा को जगह छाडी दे गिरी तो जहा रहिला ए शब्द का होछि m1 ए शब्द को एटा हला ये I2 टा को छाडी दे कि अब जत्तक रहिले सब तक होछि म्यूचुअल इंडक्टेंस note that we neglected the edge effects and considered the magnetic field ethically to be uniform through the length and width of the solenoid 2 that's a good approximation keeping in mind that solenoid is long implying L is sufficiently larger than R2 R2 होची यार बडर रेडियस एटा को पढो sufficiently larger when I come to the reverse case a current I1 is passed through the solenoid S1 the flux is equal to ताले एठी एमती बनिबो M21 बनिबो एठी करंट पास होतला बोले एठी इंड्यूस्ड होतला एबे एठी करंट पास होला माने एठी इंड्यूस हो सेमती बनिछि हो हला मोर बुझु लिखि दिछि अल्टीमेटली दीज आर द टू सेम थिंग पछा दबो क्वेश्चन प्रूव दैट एमती to coaxial cylinders रे mutual inductance remains same for number of certain number of coils ए derivation ता दबो पूरा
demonstrated the equality for long coaxial zones. However, the relation is far more general. Note that if the inner solenoid was much shorter than যদি ବହୁତ ଛୋଟ ଥାନ୍ତା and placed well inside the outer solenoid, then we could still have calculated the flux linkage N151 because the inner solenoid is effectively immersed in a uniform magnet due to the outer solenoid. ଛୋଟିଆଟେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା. In this case, the calculation M1 would be easy. However, it would be extremely difficult to calculate the flux linkage with the outer solenoid as the magnetic field due to the inner solenoid would vary across the length as well as cross section of the outer solenoid. छोटियाटे ना तो कौ जगह कौन मैग्नेटिक फील्ड सेटा कैलकुलेट करिया भारी कष्ट होता है. Therefore the calculation माने छोट सकाशे बड़र M1 माने छोट भितर को टिकिटे एठी कोन दीटांग लेंथ सेम रोज कथाटा बुझो ए दीटांग लेंथ सेम रोज टिकिटे ही था तले या सकाशे जो इधर जो करंट आसिला ता सकाशे जो या भितर के जो छोटिया सोलनोइटा भितर अछि भाबी दियो जो छोटिया सोलनोइटे एटा इजीली कैलकुलेट करि होछ बट से छोटिया सोलनोइड सकाशे दर ता भितर करंट आसिला ता सकाशे या भितर जो इंड्यूस करंट हला एटा काढिया भारी मुश्किल काहेना विभिन्न जगह विभिन्न मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होछ काना सेटा ता भितर अछि ना छोटिया टिकिटे also be extremely difficult in this case. The equality is very useful in such situations. से कहूँ आम भितर एयर मीडियम रखीचु दीटाक सोलनोइड भितर. Instead, if a medium relatively permeability μr had been present, the mutual inductance would be like this. गोटे μr टे मल्टीप्लाई कर जदि गोटे परमेएबल मेम्ब्रेन रोची एयर अच्छी बोलिक किसी लिखिनी से परमिएबिलिटी पढ़ी यही कैपेसिटेंस अप्रूव पढ़ परमिएबिलिटी. It is important to know that the mutual inductance of a pair of coil solenoids depends on their separation as well as their relative orientation. केते डिस्टेंस अछंदी को ओरिएंटेशन अच्छी कोटा टिके बंकी गिर अछि ता भीतर गोटे बड़ सोलनोइड भीतर से आर सोलनोइड बंकी गिर अछि एंगल बनै एक्सिस लाइन संगे सेरा गोटे एंगल बनै छी. अरे एमती अवस्था ना राइट क्लिक कर देले हैंग हो एठी तो एमती हे गला हे हैंग बुझलो ना राइट क्लिक कले हैंग हो एठी एठी अंडू कला होगे रिडू कला होगे हाँ राइट क्लिक करला पर सेटा खुल जाउसे सेति पई अबे लेफ्ट क्लिक कर दन नने सर एठी अछि लेफ्ट क्लिक नने सर एठी अछि लेफ्ट क्लिक एठी करला ना माने सर ए हे गेलो ना से बेबे हैंग हो जाउची न खोलले भी हैंग हो जाउची. हां सेटा तो हो तारा अछि ओटा डिफेक्ट एटी सही लास्ट को देखा से DM1 करिग्री एटी सही जो सिस्टम करूची बाहर करूची विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced EMF. The magnitude of the induced EMF depends on the rate of change of the current and mutual inductance of the two coils. So, kali पढ़ियो self inductance हो. एटा तो नहीं सॉरी होला ओहो दिलखुश गोटे लास्ट टॉपिक रहा सेल्फ इंडक्टेंस है पढ़ापढ़ी कर मुझे सरले पचार देवी आ